Question number 13. Factorization. Find an expressions for the perimeter of a rectangle with area given by. ठीक है, this is the expression for the area and we are going to find the expressions for the perimeter. So we have the formula for area of rectangle, and that is as area of rectangle is equal to L into B. So as there is an expressions given, so we are going to find the length and breadth with the help of factorization. So let's start. X square plus 2x minus 24x minus 81. So factorize it. Midterm break, so 27 multiply 3 get 81, because we need 81 multiply 1 x square, then we get 81. So 27 3 is 81 and 27 minus 3 get 24. So मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, सो ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहे हैं. सो फर्स्ट टर्म प्लस और ये लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, 27 इज ग्रेटर तो 27x एंड प्लस माइनस माइनस 3x. ओके, ग्रुपिंग कर लेते हैं. ग्रुपिंग में फर्स्ट ग्रुप में x स्क्वायर प्लस 27x में x कॉमन है. यह आ जाएगा x प्लस 27 और इन दोनों में -3 कॉमन निकाल देंगे तो ये x माइनस इंटू माइनस ए प्लस 27 मीन्स के बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो दीज आर द लाइक फैक्टर्स. x प्लस 25 कॉमन फैक्टर है और पीछे ये x माइनस 3. So look, this is the area of rectangle. So length हम ले लेंगे x plus, where length is x plus 27 and breadth is x minus 3. As we are going to find the expression find करना है for the parameter, where parameter का formula हमारे पास क्या है, आ जाएगा जी expression for parameter and that is equal to 2 times L plus B. ठीक है, expression for parameter is equal to 2 times L into B. आप इधर भी लिख सकते हैं, ये आप इधर भी लिख सकते हैं 2 times L plus B. ठीक है, और फिर मतलब कि ये हमने फाइंड करनी है एक्सप्रेशन. सो अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज इसमें डाल देंगे. ठीक है, where length is 2 times length is x plus 27. ठीक है, plus breadth is x minus 3. So open the bracket and solve it. So 2 into x plus 27 plus x minus 3. Solve the like terms. So we get 2 into 2x
प्लस 27 में से 3 माइनस कर दें 24, then multiply 2 on both with both the terms. 2 2s are 4x and plus 48. So this is the required. This is, यहाँ आप लिख सकते हैं, this is expression for parameter. ठीक है, this is the required answer. ओके इसमें एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मस्ट लिखिए, अच्छा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड में आंसर में भी एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4x plus 48.